Hello everyone and welcome to the new video on Poetic Devices. In this channel, I have made different sets of videos where I have clubbed different poetic devices of similar kind, like poetic devices based on sound, where I have taken alliteration, assonance, consonance, onomatopoeia. Then poetic devices based on comparison, where I have taken simile, metaphor. Let's begin today's lesson. आइए शुरू करते हैं. The first poetic device based on repetition is anaphora. Anaphora क्या होता है? When a word or phrase is repeated at the beginning of clauses or sentences that follow each other. इसमें या तो एक वर्ड रिपीट होता है या फ्रेज रिपीट होती है, और वो कहाँ पे प्लेस होती है? इट इज इन एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग. यहाँ पे कौन सी फ्रेज रिपीट हो रही है? गेट बिजी, और यहाँ पे भी गेट बिजी. तो यहाँ पे फ्रेज रिपीट हो रही है जो कि प्लेस्ड है बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज, है ना. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ. यहाँ पे भी गिव मी रिपीट हो रहा है और इस फ्रेज ये वाली फ्रेज भी रिपीट हो रही है, विच इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस. ठीक है. एनाफोरा में क्या होता है? देयर इज रेपिटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज that are placed at the beginning of a clause or a sentence. पोएट्री में भी आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन है फिर सेकंड लाइन है, उनके बिगिनिंग वाले क्लॉजेस में सिमिलर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं एनाफोरा. ठीक. अभी हम एग्जांपल लेते हैं. क्लास 10th की पोएम है द बॉल पोएम. उसमें पोएट कहता है, merrily bouncing down the street and then merrily over. यहाँ पे एक लाइन में merrily बोलता है, दूसरी लाइन में भी merrily बोलता है. तो वर्ड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और एट अ बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज. इसी को बोलते हैं एनाफोरा. ये याद रखिए. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द सेकेंड पोएटिक डिवाइस विच इज कॉल्ड रेपिटेशन. अब रेपिटेशन, व्हाट इज रेपिटेशन? यूजिंग अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज a number of times for emphasis. Okay, so repetition में repeat होता है एक word या phrase number of times for creating emphasis in the poem. इसी को कहते हैं repetition. आइए फिर example देखते हैं. What is he to do? ये ball poem है क्लास 10th में, उसी से लिया गया example. When the boy loses the ball, so then the poet is saying what is he to do now, है ना. तो what दो बार यूज हुआ है टू क्रिएट एम्फेसिस की अब क्या करेगा. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. बॉल्स एंड बॉल्स, दिस वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू क्रिएट एम्फेसिस, विच इज द पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन. तो रेपिटेशन में क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज रिपीटेडली इन अ line. Moving on to the third one, which is refrain. Now what is refrain? A phrase or lines repeated at intervals within a poem, especially at the end of the stanza. refrain में क्या होता है? full phrase या line repeat होती है repeatedly, मतलब कई बार full phrase या full line कई बार repeat होती है. जिसे सॉन्ग होता है, उसमें होता है मुखड़ा, फिर होता है अंतरा, है ना. द स्टार्टिंग लाइन्स एंड देन द स्टैंजास फॉलो. तो अब आप देखेंगे जैसे एक स्टैंजा फिनिश होता है तो फिर से मुखड़ा गाते हैं ना, उसी को बोलते हैं रेफ्रेन. टू क्रिएट रिदम, टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट इन द पोएम एंड ऑल्सो टू एम्फेसाइज द पॉइंट. अब जैसे एक एग्जाम्पल है क्लास 9th में द ब्रूक पोएम है. उसमें क्या बोलता है पोएट? For men may come and men may go, but I go on forever. So Brooke is saying that men keep on taking births, they keep on dying, but nature lives forever, है ना. तो यही वाली लाइन आप देखेंगे हर दो स्टैंजा के बाद फिर से ये लाइन रिपीट हो रही है. So it is giving a musical rhythm to the poem
It is also emphasizing on the point which the poet wants to convey. ठीक है? तो refrain is the repetition of a full phrase or a full line repeatedly throughout the poem. तो यही आज हमने 3 poetic device सीखी हैं, anaphora, repetition and refrain. I hope it is clear to you all. I have explained it elaborately with examples. Still, if you are having any doubt, you can write in the comments below. I will clarify your doubts. Hello everyone, welcome to the channel. In this video today, we will be learning about poetic devices. Here I have taken 4 poetic devices: alliteration, assonance, consonance, and onomatopoeia. All these are related to sound. So let's begin with the first one, alliteration. In this poetic device, there is repetition of consonant sounds. Now for this, you should know what are consonants. In English alphabet, there are 26 letters, you all are aware. So A, E, I, O, U, these are called vowels, and the remaining letters, they are consonants. So in this particular poetic device, there is repetition of consonant sounds at the beginning of words which are placed near each other, usually on the same or adjacent lines. So कहने का मतलब है कि एक ही लाइन में किसी पोएट्री में आप वर्ड्स देखेंगे, उनके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. फास्ट एंड फ्यूरियस, इसमें आप देखेंगे फ साउंड इज रिपीटेड हियर एंड फ्यूरियस में भी फ साउंड इज गेटिंग रिपीटेड. वर्ड्स ऑफ विजडम, व तो ये साउंड रिपीट हो रहा है, और ये कहाँ प्लेस्ड है? वर्ड्स के बिगिनिंग में. रेनू रैन इन द रेजिंग रेन, यहाँ पर भी र साउंड रिपीट हो रहा है. सो अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस में क्या होता है? देयर इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स placed at the beginning of words, and these words usually they are on the same lines or in the adjacent lines. Next, assonance. अब assonance में क्या होता है? Again there is repetition, but this time it is repetition of vowel sounds in the words which are placed near each other. Again they are usually in the same line or adjacent lines. जैसे हमने पिछली poetic device में पढ़ा था alliteration, उसमें क्या repeat हो रहा था? consonant sound but in the beginning of the word. और assonance में क्या repeat हो रहा है? vowel sounds. The vowels generally appear in the middle of the words. अब ये beginning में नहीं है, ये आप जनरली देखेंगे या तो मिडिल ऑफ द वर्ड और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड. कोई जनरल रूल नहीं है कि जनरली इन द मिडिल ऑफ द वर्ड्स, दे कैन बी प्लेस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो. वी हैव टू फोकस ऑन साउंड इट प्रोड्यूसेस. अगर आप देखेंगे इसमें वाल साउंड्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. जैसे गो स्लो ओवर द रोड, ओ ओ ओ. So ये similar sound produce हो रहा है एक vowel का. So we will say there is assonance in this poetic device. एक और देख लीजिए, sell the wedding bells, ए. So जो भी vowel sound repeat हो रहा हो, उसमें हम बोलेंगे assonance है. I hope this is clear. अभी next, consonance. Now this poetic device is similar to alliteration, as it also has the repetition of consonant sounds. So ये similar है किससे? alliteration से, क्योंकि alliteration में भी repetition होता है consonant sounds का. But here the only difference is that the sounds are repeated generally in the middle or the end of words that are placed near each other, usually in the same or adjacent lines. क्या एक difference है कि यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा और जो रिपीट होगा वो इधर मिडल ऑफ द वर्ड में होगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड्स. नाउ अब आप ये ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि एंड, अगर एक लाइन में एंड में ही सभी रिपीट हो रहे हैं. जैसे आप सेकंड एग्जांपल में देखिए, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक,
क साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहीं पे एंड ऑफ द वर्ड में है, कहीं पे मिडल ऑफ द वर्ड. नाउ एंड और मिडल जहां पे भी प्रोड्यूस हो रहा है सिमिलर साउंड, लेकिन है वो कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस. फर्स्ट एग्जांपल में जैसे ही स्टूड ऑन द रोड एंड क्राइड, ड साउंड इज गेटिंग रिपीटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईच वर्ड. सो इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं कॉन्सोनेंस. अब नेक्स्ट, onomatopoeia. Now this is a poetic device where words produce the actual sound of the thing they refer to or describe. यहाँ पे शब्द बातें करते हैं. अगर हम वर्ड्स पढ़ते हैं हमें क्लियरली पता लग जाता है वो क्या बताना चाहते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स लेंगे, हिसिंग ऑफ स्नेक. सो स्नेक की साउंड है हिस, हिसिंग ऑफ स्नेक. क्रीकिंग ऑफ द डोर, when the doors are not oiled, so they make a creaking sound, creaking of the door. Little hands clapping and little tongues chattering, chatter बातें करना. Pitter patter rain, पानी की बूंदें जब छत के ऊपर पड़ती हैं तो जो साउंड आता है pitter patter rain. Pouring under. Leaves rustle, जो सूखे पत्ते फड़फड़ाते हैं उसकी आवाज. Crackle in the air. So onomatopoeia क्या है? It is a poetic device where words produce that kind of sound which they refer to or describe. So यहाँ पे हमने आज 4 types of poetic device पढ़ी हैं. alliteration, assonance, consonance and onomatopoeia. alliteration एक बार रिवाइज कर लेते हैं. alliteration में क्या होता है? repetition of consonant sound in the beginning of the words which are placed either in the same line or in the adjacent lines. Second है assonance, where there is repetition of the vowel sound in the middle or towards the end of the words. Again ये words एक ही line में generally होंगे या adjacent lines में होंगे. Third is consonance, repetition of consonant sound. alliteration और consonance में एक यही डिफरेंस है कि consonance में repetition होगा consonant sound का, जो कि placed होगा either in the middle or towards the end of the word. और last में हमने पढ़ा onomatopoeia. This is a poetic device where words produce the actual sound of the thing they refer to or describe. जैसे कि यहाँ पे हमने hissing, creaking, clapping, chattering, pitter patter, rustle, crackle. So ये poetic device है. Now let's solve a quick test. It has got only 5 parts. आप इसके आंसर्स या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने कोई रफ पेज में लिख सकते हैं. Later on I'll be sharing answers to these questions. First is stands, straight, sprawling, superior. आप इसको अपने आप पढ़ोगे और ध्यान दोगे कि कहाँ पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन जो भी 4 हमने पोएटिक डिवाइस पढ़ी है उनमें से कौन सी यूज की गई है ये आप यहाँ पे बता दीजिए. Stands, straight, sprawling, superior. Second is he will not see me stopping here. Third, whose woods these are? I think I know. Fourth, her brown braid touched her brow. And fifth, it cracked and growled. आप अपना टाइम लीजिए और आंसर्स लिखिए. I will be now sharing the answers to them. चेक कर लीजिए, आपको फुल ऑन फुल तो मिले ही होंगे. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज्ड है और किस रीजन से यूज्ड है. In today's video, we will be learning about a new poetic device which is called enjambment. B is silent over here, so we will call it enjambment. What exactly is it? Then why do poets use it in their poetry? And along with a few examples, we'll try to understand. So by the end of the video, it will be absolutely clear what exactly enjambment means. Enjambment, it refers to the continuation of a sentence or a phrase from one line to the next without using any punctuation marks to indicate a pause. So what exactly does it mean? That if you will start reading
the first stanza of a given poetry. So the particular line, like first line, second line, you can take up any line. So the moment the phrase or the sentence finishes, it does not have any punctuation mark, but the idea moves on to the next line. Then we read the next line. Still, if there is no punctuation mark, the idea carries forward to the third line, and so on. Generally, we have seen the stanzas are for 4 lines. So, if there is no punctuation mark at the end of the sentence, you can say that poetic device enjambment has been used. Without using any punctuation mark to indicate a pause. So, there is no pause. That means the idea which has started, that hasn't finished yet. So, these are the full stop, comma, semicolon. They indicate pauses in a given poetry. So, they are not used by the poet. So, second thing is that same idea or thought carries to the next line. So, that is why if the poet has started writing his poetry, so he hasn't finished his idea or the idea hasn't completed in the first line, it has carried forward to the second line, third line, so on. By the time we come across any punctuation mark or full stop, we can say enjambment poetic device has been used. Now, we can also say that the meaning runs over or steps over from one poetic line to another. So that means the meaning which is being conveyed, it is being carried forward to the next line and then to the further next line. Why do poets use this? Okay, we can say that, see, generally we have an idea when we are familiar with the prose. You all are aware with the prose. जैसे हम stories पढ़ते हैं तो format same होता है, कहीं कहीं पे full stop आ जाएगा, comma आ जाएगा, question mark आ जाएगा, sign of exclamation आ जाएगा. So that means the sentence or phrase has finished. अब यहाँ पे why does the poet use enjambment? To intensify anticipation. Anticipation आगे क्या होगा? We don't know because the idea has not finished yet in the first line itself. So to increase that anticipation in the readers, the poets use it. It can be also to add complexity. You must have by now come to know poetry is more complex than reading prose. Prose हमें आसानी से समझ आ जाता है. Poetry में थोड़ा सा difficulty होती है, चाहे वो हिंदी poetry हो या English poetry हो. Poems are slightly more complex to understand. So to add more complexity to it, the poets use poetic devices, and enjambment is also one of them. Then removing predictability. So you cannot predict that the idea has finished here. So that predictability is removed from your mind and you are curious to know what will happen next. So that is why enjambment poetic device is used by the poets. Now let's understand it more with the help of some examples. So here I have taken 2 examples from the poem. They are complete poem in itself. So first one is Dust of Snow. It is written by Robert Frost. So let's read it out. The way a crow. So we can see here nothing is there, semicolon, comma, nothing is there. The way a crow. So reading also we will not give a pause over here. We will also continue to read it in the form of a prose. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. One stanza has finished. Still no punctuation mark has come till here. So we will again read the second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So he is saying in the complete poem we can see full stop has come only at the end. That means the same idea has continued throughout the poem. Again we can just read it in the form of prose. Just try to understand it in the form of prose. जैसे कोई कहानी सुन रहे हो आप, उसी तरीके से बस what is the difference? It has been broken down into small phrases. That is the only difference. Read it in the form of prose and then you will understand the meaning. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued का मतलब होता है to hold in regret. तो एक ये हो गया. This is from the Dust of Snow, Robert Frost. We have seen that
Only at the end of the poem this punctuation mark has been used. Now let's move on to the second example. This is from the poem Fire and Ice, written by Robert Frost. Some say the world would end in fire, some say in ice, full stop. So that means we have to read these two lines together to understand the complete meaning. Some say the world would end in fire, some say in ice. That means the viewpoint is divided between two schools of thoughts. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Again, full stop is here. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. That means he is siding with those who are favoring the fire element. So that you will have to read this poem to understand the complete meaning. But here I am just teaching you about the poetic device enjambment, that how you should read the poem when poetic device enjambment has been used in a poem. So then don't stop at the end of the sentence just thinking that the idea has finished here. You read it on to the next one. Here full stop has been used, but taking the example of this one where the punctuation mark is only used towards the end, you have to read on to understand the entire meaning. I hope this poetic device is clear to you. Today in this particular video, we will learn about figures of speech, literary devices or poetic devices, which are hyperbole and euphemism. Now only these two have been clubbed together today because they are totally in contrast to each other. I haven't included all the figures of speech together so that it doesn't create a confusion in your mind. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लेट्स बिगिन। So let's learn about hyperbole. In hyperbole, a statement is made emphatic by an overstatement. कहने का मतलब है एक स्टेटमेंट में क्लैरिटी कब लाते हैं, जब उसको ओवर स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट करते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज अ ग्रेट एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मीन्स किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। Now let us learn it with the help of examples. We all have experienced it at our homes. Our moms telling us that, haven't I told you 100 times to tidy up your room? She must not have told us 100 times. कहने का मतलब है कि कई बार बोल चुकी हैं कि टाइडी अप करो, अपने रूम को ठीक करो। और जैसे कि टीचर अगर क्लास में स्टूडेंट्स बहुत बात कर रहे हैं, सो शी विल टेल दैट हाउ कैन यू टॉक फॉर आवर्स टुगेदर। तो अपनी स्टेटमेंट तो प्रेजेंट कर रही है ना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल के। सो यही हाइपरबोली की सुंदरता है, दैट वी जस्ट एग्जैजरेट समथिंग टू मेक इट क्लियर टू द अदर पर्सन। अब कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, द कार वेंट फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ही इज ओल्डर देन द हिल्स, मतलब कि वो बहुत ही ओल्ड है। I will die if she asks me to dance. She is as big as an elephant. अगर वो काफी हेल्दी है तो बोला है बड़ी भी है और प्लम्प भी है, एक एलिफेंट की तरह। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़िए, ये पिक्चर्स के साथ दिए गए हैं so that there is a better understanding. The king's nose was 3 feet long. My dad can lift over 2 tons. The food was so hot, my ears were smoking. The boy runs faster than a car. I'm so tired, I could sleep a year. I'm 20 feet tall this month. I must have walked 100 miles. He cried so long that he made a lake. I'm so hungry, I could eat a horse. You have a million toys at your house. तो पता लग गया ना, यहाँ पे किसी भी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के बोल के उसको और क्लैरिटी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होती है फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबोली। आप भी अगर कुछ लिखते हैं, अपने रिटन पीस को और एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज दिस हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच इन योर रिटन वर्क। अब बात करते हैं यूफेमिज्म। ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है पिछले पोएटिक डिवाइस से। व्हाई? Because this is a pleasant way of stating an unpleasant truth which should be usually avoided. Or we can say
to substitute a word or phrase with a more pleasant one. जब हम किसी से, अपने फ्रेंड से, नियर एंड डियर वंस को कोई अनप्लेजेंट चीज बताना चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो दुखी हो जाए वो सुन के, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा ट्विस्टेड वे में प्रेजेंट करते हैं. जनरली अनप्लेजेंट ट्रूथ जब किसी को बताया जाता है तो वो हर्ट करेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे, अपने वर्ड्स को थोड़ा मोल्ड करके प्रेजेंट करेंगे. बस वही है ये यूफेमिज्म. Okay, it is just a substitute word or a phrase with a more pleasant one. Let us understand it now with the help of examples. अगर हम कहते हैं he has fallen asleep, so कहने का मतलब है he is dead. लेकिन अगर हम बोलेंगे he has fallen asleep तो वो थोड़ा सा hurt नहीं करेगा and it will not sound very harsh, cruel. You are telling me a fairy tale. अब हम जैसे कोई हमारे को फ्रेंड अगर कुछ झूठी बातें या कुछ वैसे ही बता रहा है तो हम बोलेंगे ओ यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल. लेकिन अगर हम उसको सीधे कह देंगे यू आर लाइंग टू मी, सो ही माइट टेक ऑफेंस. ओके, सो वही बात है यूफेमिज्म. अब जैसे हाइपरबली में था किसी भी चीज को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल देना, उसका ऑपोजिट हो गया यूफेमिज्म. कि आगे वाले बंदे को, आगे वाले लोगों को खराब ना लगे तो हम क्या करेंगे, हम वो वाले वर्ड्स यूज करेंगे जो कि ज्यादा प्लेजेंट हो. और भी एग्जाम्पल से समझते हैं. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. सेइंग शी पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ सेइंग शी डाइड. सेइंग बिग बोन्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग ओवरवेट और हेवी. We can also say pleasantly plump instead of saying heavy or overweight. Now, next, saying I have to let you go instead of saying you are fired. Now, you are fired का मतलब है जब कोई employer किसी employee को job से निकाल दे. So अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है अपने थॉट्स that I have to let you go for this or that particular reason, so it is not going to hurt the other person a lot. I hope now both the literary devices hyperbole as well as euphemism is totally clear to you with lots of examples. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए और लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए. Hello everyone. You had asked me to make a new video on some poetic device. So today this video is about a new poetic device, personification. But here I have taken only one at a time so that it doesn't create any confusion in your mind. ठीक है? So शुरू करते हैं. Poetic device और figure of speech same है. Don't get confused in that. ठीक है? अब ये personification क्या होता है? It's very simple. आप समझिए. Attributing human qualities to inanimate or non-living things. इसका मतलब है कि जब हम non-living things को human qualities देते हैं, okay, so that they appear to be living beings, उसे कहते हैं personification. जैसे कि they appear to be living human beings. अब आपकी 9th और 10th में से मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, उसके बाद में जनरल एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करूंगी आपके साथ. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं हम इसको. जैसे एक है क्लास 10th में द बॉल पोएम, आपको आप वहां से चेकआउट भी कर लीजिए. इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम, द बॉल पोएम. उसमें से मैंने एग्जाम्पल लिया है मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. अब ये एक बॉल के ऊपर है. एज द नेम और टाइटल सजेस्ट दैट दिस पोएम इज बेस्ड ऑन बॉल. बॉल के लिए बोला गया है इट इज मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. अब मैरिली इज हैप्पीली एंड बाउंसिंग मीन्स कि टप्पे खा के नीचे खुश होके जा रही है. बॉल तो खुश हो नहीं सकती ना. सो दैट मीन्स दैट हियर बॉल हैज बीन पर्सोनिफाइड, हैप्पीली जंपिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग. It has been portrayed as the ball is very happy and it is jumping, as when we are happy so human beings jump. तो ये है personification. आई होप आपको समझ आया है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आउट ऑफ द सी केम ही. अब ये एग्जाम्पल मैंने लिया है क्लास 10th की इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. उसमें से लिया है आउट ऑफ द सी केम ही. जब उसकी शिप, मैरिनर की शिप सी में फंस जाती है तो तब आउट ऑफ द सी केम ही. अब ये ही क्या है, यहाँ पे ही बोला गया है सन को, तो अचानक से ही अपीयर हो गया, एज इफ सम ह्यूमन बीइंग इज अपीयरिंग फ्रॉम द सी.
यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। इसी पोएम से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। He struck with his overtaking wings. He struck. अब किसके लिए ही यूज किया गया देखिए, सी स्टॉर्म। अचानक से जब सी में स्टॉर्म आया था, व्हेन द मैरिनर्स along with his companions, their ship was stuck in the sea. So he struck. अब किसको पर्सोनिफाई किया गया, सी स्टॉर्म को, है ना। तो यहाँ पे सी स्टॉर्म हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ मैन, ही। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो है क्लास 10th की पोएम है द ट्रीज। सिंबॉलिक पोएम है ना, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। उसमें क्या कहते हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि ट्रीज अंदर से बाहर जा रहे हैं। अब ट्रीज चल तो नहीं सकते हैं, so they have been personified here. Okay, the trees are personified as men can move, not trees cannot move, so they have been personified. अब इसी तरीके से inanimate object, जो ऑब्जेक्ट एक ही जगह स्थिर रहता है, एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकता है, उसको ह्यूमन क्वालिटीज देकर बताया जाता है दैट इट हैज कम अलाइव। यही है ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, पोएट्री की ब्यूटिफिकेशन की जाती है। अब एक और देखिए, सेम पोएम है द ट्रीज में से ये एग्जाम्पल लिया गया है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। रूट्स तो वर्क करती नहीं है ना, बट हियर दे हैव बीन शोन एज इफ दे आर वर्किंग एज ह्यूमंस वर्क। सारी रात रूट्स काम कर रही थी, ठीक है। तो ये तो खैर मैंने सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक से एग्जाम्पल्स लिए हैं। जनरल एग्जाम्पल्स भी कुछ देखते हैं, उससे और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपका। Now let's understand personification with the help of some common examples. First example है, money is the only friend that I can count on. Count on means depend on. So example में बोल रहे हैं money is the only friend that I can count on. That means friends के ऊपर तो इतना मैं believe नहीं कर सकता, but money is the friend on which I can depend on. So किसको personify किया गया है, money को फ्रेंड की तरह लिया गया है, जो कि फ्रेंड एक लिविंग थिंग होता है। मनी इज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और उसको कंपेयर किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है एज अ लिविंग फ्रेंड। नेक्स्ट है, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। लाइटनिंग, बिजली चमचमाती है जब, तो अक्रॉस द स्काई। अभी अक्रॉस भी कब यूज करते हैं, देखिए, अक्रॉस, इन द स्काई नहीं बोला है ना, इन द स्काई इज एट सम पर्टिकुलर पोर्शन, कह रहे हैं अक्रॉस द स्काई। तो लाइटनिंग डांस तो नहीं कर रही, वो तो चमक रही है। दैट मीन्स लाइटनिंग हैज बीन पर्सोनिफाइड एज इफ समबडी इज डांसिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। अब एक और देखते हैं, द विंड हाउल्ड इन द नाइट। व्हाट इज हाउलिंग? हाउलिंग जोर से आवाजें करना, जनरली वुल्व्स और समटाइम्स डॉग्स ऑल्सो हाउल इन द नाइट, आवाजें करते हैं ना। तो विंड हाउल्ड इन द नाइट, तो विंड बहुत जोर से आवाजें करके चल रही थी, सो विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड एज इफ सम ह्यूमन इज हाउलिंग इन द नाइट। I hope you have understood in detail the poetic device personification. Once we must revise whatever we have learned today. What is personification? Giving human qualities or attributing human qualities to non-living things so that they appear to be living things. So yahi hai personification. I hope it's clear to you all. See you next time.